इनफैक्ट आज जो है हम लोग पेशेंट and their attendants' rights and responsibilities. We'll be discussing a little bit on this topic. And as you people are aware, since the doctors have become consultants and the hospitals are being owned by private people, non-medicos, businessmen, and with implementation of Consumer Protection Act 1986, and in addition, the order of Honorable Supreme Court for application of Consumer Protection Act on doctors and healthcare providers and healthcare establishments. A lot of violence against doctors was observed and seen in the environment, especially in India. In fact, when I was studying or we were studying in the medical college, we have never heard of this violence against healthcare establishment and doctors. But now, last 15-20 years, it is on rise. And in 2021, the Indian Medical Association, they had observed doctors production day on sort of thing in the month of June. This is the situation we are facing today. That's the reason. This is important legal aspect of health, and the series of legal aspect of health. This is first chapter, patients' rights and responsibilities. In fact, before discussing the patient rights and responsibility, I must discuss something on this definition of health. It's very, very important. Like as regards definition of WHO, as per WHO Constitution, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. This fourth aspect, spiritual dimension, has been added by Indian people because of our spiritualness of Sanatana Dharma or Bharat. It has very, very importance as regards health of an individual is concerned. You are saying that I have colored this well-being as red. It means there is a lot of importance of well-being. You must know what is well-being. As for Oxford English Dictionary, the well-being is state of being comfortable, happy, and healthy. It's basically like a person when feels comfortable in each and every type of environment, feels happy or healthy, and we can say or we can accept that he is in a state of well-being, or he or she in a state of well-being. As regards dimensions of well-being is concerned, there are various people have divided dimensions in many aspects. Some say 3 dimensions: physical, social, mental. Some say 4, including spiritual. Some say 5, they include economic. But as regards, in fact, I am concerned, I will be discussing 8 dimensions of well-being. These are physical, occupational, social, spiritual, intellectual, environmental, financial, and emotional. As regards physical dimension of well-being is concerned, it is related to human body with reference to nutrition, exercise, weight management, any disease prevention, ergonomics, use of tobacco, alcohol, etc. As regards emotional wellness is concerned, the knowledge and the skills to identify personal feelings and ability to handle those emotions. As the definition goes like this: the ability to successfully handle life's stresses and adapt to any type of change and difficult times. Any type of ability to successfully handle life stresses, all type of stresses, change and difficulties. If someone is able to face, then one can say that emotionally the person is stable. Then comes the social wellness. It pertains to social connections, relationships and personal expressions. What type of relations we have in our family, in our society, between communities, and etc. As regards spiritual wellness is concerned,
the belief in a higher power, maybe following any god, single god or multiple gods, human god. And such for purpose and meaning in life, basically related to spiritual values. Then comes the occupation wellness, relates to your job, profession, and workplace, career, etc. What is intellectual wellness? This pertains to brain health and growth via thought-provoking mental activities. Thought-provoking mental activity, they should be positive. They should never be negative thought. As the environmental wellness is concerned, includes eco-friendly considerations, active participation in keeping environment in a good condition, and recycling, proper disposal of waste, including electronics, proper disposal of medicines, energy, use of fuel, and water conservation, use of sustainable products, etc. meaning how to keep your environment human friendly, so that nobody is affected adversely because of the adverse environmental conditions or situations. And the last and final one is the financial wellness pertaining to finances, regarding knowledge and skills of financial planning and management of expenses. It is a very, very important dimension of well-being. In fact, just one example, like last 15 days back, the Apollo gave us the estimate of 4 lakhs rupees, and they are finally at 11:30 midnight. On the day of discharge, they gave us bill of 6 lakhs plus. The happiness and wellness had gone for a 6 as regards to the spirit. In fact, at that point of time, no one at Apollo billing counter was happy, because each and everyone was facing this problem. Whether you are a good hospital, having good doctors, latest machines, but this factor of wellness, economy, is considered as cheating. Everyone was telling the Apollo hospital is cheating because they give some estimate and they give escalated less. We have also faced the same. But nobody should, in fact, healthcare environment, they should not do these type of activities. What are source of rights and responsibilities? As everyone is aware, the Constitution of India is source of rights and responsibilities. As regards preamble of Indian Constitution is concerned, you can see in this that we the people of India, the power is coming from we the people. आम जनता, आम लोगों के से power आ रही है. We cast our vote, elect our government, and give them power to rule us. What type of country is this? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. Republics mean we are empowered to elect our own king, that is President of India. To secure all its citizens, what this constitution is giving us? Justice, social, economic and political, liberty of everything, thought, expression, belief, faith and worship, equality of the status, irrespective of financial position, sex, race, religion, language, etc., state, etc. And the equality of opportunity. A common man can become president or prime minister, or he can avail or reach up to any point. Fraternity, Bhaichara, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. As regards, in fact, I must ask you people, what is most important in this preamble of Indian Constitution? अगर one word में अगर बताना हो, तो ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा पार्ट है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने अंग्रेजों के शासन में और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस डिफरेंस क्रिएट किया?
अदरवाइज प्री इंडिपेंडेंस एक राजा था, सिविल सर्विसेज थी, पुलिस थी, थानेदार थे, बैंक, सब कुछ था। तो कोई बताएगा कि क्या ऐसा है कि प्रीएम्बल ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऐसा क्या दिया? व्हाट इज द डिफरेंस? वो यहाँ कोई बताएंगे? डेमोक्रेसी, ओके। और कोई पॉइंट? रिपब्लिक, रिपब्लिक। और कोई पॉइंट? सॉवरेनिटी। और कोई पॉइंट? पूरे प्रीएम्बल में एक ही शब्द ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जिसने सिर्फ आपको बराबर कर दिया है, आपको एक इंडिपेंडेंस दी है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दी है, ठीक है। हाँ, कोर्ट, जस्टिस, पहले भी कोर्ट थे, मिलते थे जस्टिस पे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा पहले भी लोगों में था, लोग आपस में रहते थे, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं था। है कोई शक और किसी के दिमाग में बात? As regards I am concerned, dignity of individual, इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करने की आजादी जो है, आपको ये जो डिग्निटी इंडिविजुअल है इसने दी। दिस इज द बेसिक। एक, अगर आप लोग हिल स्टेशन में गए हो, या जो दिल्ली में जो क्लब है, कौन सा बड़ा क्लब में नाम याद नहीं आ रहा है, जो माल बोर्ड्स हुआ करती थी, वहां पे नोटिस लगा करता था, उस नोटिस पे क्या लिखा होता था? Dogs and Indians are not allowed. There was no dignity of individual. The dignity of individual जो थी, जो हिंदुस्तानी लोग थे, भारतीय लोगों की कोई dignity, they were equated with dogs, animals. This is the only thing. What is dignity? What is at stake is human dignity. If a man is not accorded respect, he cannot respect himself. And if he does not respect himself, he cannot demand it. ये बोल गए सीजर जी। अरिस्टोटल ने क्या बोला? Dignity does not consist in possessing honors, but in the consciousness that we deserve. अगर हमारी consciousness जो है, अगर हमारा अंतरात्मा है, अगर वो हमें जो है हमारी dignity, हमारी respect ये मान के चल रही है कि we have not been respected, we have been equated with dogs or animals, then you cannot have human dignity. What is human dignity? It comes from Latin word dignitas, mean worthiness. यहाँ लिखते हैं ना सब लोग, वर्दी चेयरमैन, वर्दी प्रेसिडेंट बोल करते हैं ना। It denotes respect and status. The dignity is basically, human dignity, respect and status. कैसा respect and status? Human being वाला। इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीटमेंट अगर मिल रहा है, तब आप कह सकते हो कि ह्यूमन डिग्निटी इज बीइंग मेंटेन्ड। एन इंडिविजुअल और ग्रुप सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड एम्पावरमेंट। जब बंदे को रेस्पेक्ट एंड स्टेटस मिलेगा, देन ही फील्स एम्पावर्ड। व्हाट आर द एलिमेंट्स और डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी? ऑल राइट्स are related to these elements or dimensions of dignity: equality, integrity, non-discrimination, provision, protection, privacy, self-determination, participation. What happens, or what happened in India in recent 10-15 years, in fact not more than 2018 onward? The NHRC, the Human Rights Commission of India, had drafted Charter of Patient Responsibility or Duties, Rights and Responsibilities in 2018. They had drafted. Based on what? Based on Constitution of India. They gave 13 rights initially in first draft. 13 rights were there. In 2019, the Ministry of Health and Family Welfare wrote a letter to all the states and giving them directions to tell their health department to convey to these people, healthcare setters, to follow the rights and rights of the patients and their families. So what are these rights? Right to human dignity. First right is right to human dignity. कि इंसान को इंसान की तरीके से, ये नहीं है कि वो तेरी क्या औकात है,
एक गरीब आदमी ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है या एक फटे कपड़ों में ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है, ठीक है, वो इंसान है. As long as this person has come to your casualty or emergency department, you got to treat. आप ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब है, फटे कपड़े से नहीं ट्रीट करूंगा, इसके बाद नहीं पेमेंट करने की. या ये किसी चीज का आया हुआ है, सीजी चीज का गवर्नमेंट कम पेमेंट करती है. अगर पेशेंट आता है तो आपको देखना ही पड़ेगा एज रिगार्ड अगर वो आपकी इमरजेंसी में आया है या उसको लाया है. ह्यूमन डिग्निटी हैज टू बी मेंटेन्ड. रिस्पेक्ट के साथ आप उसको कह नहीं सकते. यू कैन नॉट टेल अ पर्सन कि वी विल नॉट ट्रीट यू बिकॉज यू आर अ पुअर पर्सन और यू आर फ्रॉम दिस स्कीम और यू आर फ्रॉम दिस थिंग और यू विल नॉट बी एबल टू पे दिस थिंग. Ability में you will have to go to treat under the Supreme Court has given directions. Then important is privacy. गरीब आदमी है तो सड़क पर देख लो उसको, देखो रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइवेसी. ऐसा नहीं, उसकी डिग्निटी को आपने, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी. अगर कोई फीमेल है तो आपको फीमेल अटेंडेंट होगी तभी आप एज ए मेल डॉक्टर उसको देखेंगे. ये मैंडेटरी है एज रिगार्ड्स द स्टार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स. प्राइवेसी हमने मेंटेन करनी ही पड़ेगी. राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी. Whatever information patient is giving us, we got to keep that confidential from others. ये उस इंडिविजुअल के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो तो खुद ही बता रहा है. सम HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ये नहीं कि आप बोर्ड लगाओ सामने चाहिए. नो. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 14 उसमें जाके बंदा आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है, कोर्ट में आपसे कंपनसेशन मांग सकता है कि माय डिग्निटी हैज बीन लोअर्ड. नॉन डिस्क्रिमिनेशन. Patient cannot be discriminated on the basis of age, sex, economic condition, region, language. No, each and everyone is equal. Right to information. Discuss maybe next slide. We will discuss. Right to informed consent. Whatever procedure we are doing or we are supposed to be doing, or treatment or investigation, special investigation, the patient has a right to be informed regards procedure, any complication, any advantage versus loss, or whatever the person has to be informed. Adult has to give his or own consent. ये नहीं कि एक लड़का बोल रहा है मेरे बाप को वो मत रिससिटेट मत करो, नहीं हो सकता. या माँ बाप बोल रहे हैं ये डिसेबल्ड चाइल्ड है, इसकी कहानी फिट कर दो, हम आपको कंसेंट देते हैं, नहीं हो सकता. Emergency medical care. Anyone coming to any hospital, whether private, corporate, clinic, nursing home, in emergency department, where he comes or brought, accident case है, MI case है, आप उसको casualty, आप उसको first aid देनी ही होगी. अगर मना करते हैं, then it is violation of charter. The hospital can be taken to task. The right to records and reports. The patient has full right to see his records. Full right to see or her reports, whatever investigations we are doing, whatever procedures we are doing, उसको अपना रिकॉर्ड देखने का अधिकार है. But it does not mean कि some family member you show those records to some family member, so he may take advantage. Today he is looking after the patient, tomorrow he will not be looking after, and he will take the undue advantage of those records or reports. Right to safety, each and everyone. They have a right to full safety. Safety in hospital, physical safety, safety of property, safety during procedure, safety during investigation, during treatment, during transportation, during shifting from one place to other place. Right to quality care. The patient has full right to quality care as regards whatever protocols are being followed or the available resources and available latest protocol के हिसाब से. As regards right to information concerned, patient and caretaker they have a right to information regarding the patient's condition. ठीक, but there is some difference. कुछ पॉइंट है जो caretaker को नहीं बताने होते, कुछ पॉइंट जो है. But patient has to be told each other. Info about illness, diagnosis, investigations,
result of these investigations, possible complications, possible outcome. This information should be in simple language. Whatever language that patient or attendant understands. Otherwise, there will be a language barrier and the patient will be considered vulnerable patient. Right to know the identity and professional status of doctors and their assistants. Patient has full right कि जो डॉक्टर साहब मुझे ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने केसेस किए हैं, सब बता रहा है. आइडेंटिटी ऑफ प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर, इसका प्राइमरी क्योंकि आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स हैं, क्रॉस रेफरल्स होते हैं, तो आइडेंटिटी ऑफ प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर हैज टू बी known to the patient and the attendants. That's the reason every doctor has to introduce himself or herself. I am Dr. So and so, and I am from this department or this subject, and I will be dealing with this organ of yours or this problem of yours. The introduction is to mitigate करने के लिए the doctor has to or the consultant should introduce himself or herself. Then a right to choose alternative treatment. Patient is full right. Alternative treatment means कि alternative system of treatment. अगर पेशेंट चाहता है तो वो आयुष में कुछ जा सकता है कि भी जा सकता है, उसको पूरा अधिकार है, कह सकता है कि मैं आप जो है मैं वहाँ का ट्रीटमेंट करूँगा, हम कंपेल नहीं कर सकते. Right to second opinion. Each and every patient has full right to have second opinion. Why second opinion? क्योंकि अब there is no faith. ना तो डॉक्टर्स में फेथ है ना सिस्टम में फेथ है, क्योंकि हम लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं कि वो जो फेथ बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स था, दैट इज लैकिंग नाउअडेज. दैट्स द रीजन पर्सन दैट पेशेंट रिक्वेस्ट यू और आस्क यू फॉर सेकंड ओपिनियन, यू गॉट टू गिव हिम समरी ऑफ द. दैट्स द रीजन द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट हैज टू बी देयर. सो कैसे वो करना है कि पेशेंट को जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, right. As per that right to information, the person has to be given, or patient has to be given full information regarding this diagnosis, investigations, what procedure we are supposed to be doing, क्या उसके advantages and क्या उसके complications होंगे, क्या possible outcome होने हो सकते हैं, day to day basis के ऊपर जो है. अगर वो counseling हमारी proper है, then ये second opinion के chances कम हो जाते हैं. Otherwise, yes, person has full right to second opinion. Right to transparency in rates. The transparency in rates has to be there. आजकल तो पैकेज सिस्टम हो गया. This package system has also eroded the image of doctors, especially image of doctors. जब से ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए हैं, तब से पैकेज सिस्टम शुरू हो गए. तब से भी क्या, इनफैक्ट जब से ये स्कीम आई है गवर्नमेंट, पैकेज सिस्टम सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. सीडी से स्कीम ने इंट्रोड्यूस किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया कि भाई फर्निया कराओ, इतने पैसे लगेंगे, भले कोई कॉम्प्लिकेशन. ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स हैज टू बी देयर. Right to choose the source for obtaining medicines and tests. आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स में, उसमें they have their own dispensaries. The patient has full right to go to any chemist to purchase medicines. Or the patient has full right to go to any laboratory or diagnostic center. You cannot compel कि आपको इसी लैब से कराना है या इसी diagnostic center से जाके MRI कराना है, CT कराना है. It is his will or her will. So this was in brief as regards this thing is concerned. So other sources, what other sources have been considered in making those rights prepared by Ministry of Health and Family Welfare, but are drafted by National Human Rights Commission, the Constitution of India, the Medical Council Regulations 2002, Consumer Protection Act 1986, and Clinical Establishment Act. The Clinical Establishment Council especially has approved these rights of the patients. What we are following, in fact, on each and every floor, the charts have been pasted in our hospital, and in fact, each and every hospital, at each and every floor, you can see the chart of responsibility, rights of patients, and their family or attendant, or responsibility of the family attendants. As regards patient family rights, our hospital is concerned, respecting values and belief, whatever type of values बंदा जो patient मानता है, whatever type of beliefs, we have to
accept those. Any special preference, cultural needs, spiritual needs. In fact, 2-3 दिन पहले ही जो है क्या कहते हैं अपना जगमाल सर इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे इन रिलेशन टू पेशेंट्स. जब कल ही की बात कि पेशेंट के रिक्वेस्ट आई कि इनको हनुमान चालीसा सुना दी जाए कान पे. यू गॉट टू रिस्पेक्ट दैट. आप ये नहीं कह सकते कि सर हम एलोपैथी हॉस्पिटल है, यू विल नॉट अलाउ. इट इज हिज और वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चरल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, सारे जो राइट्स हैं बिकॉज ऑफ दिस. सबसे पहला हमने ये लिखा अपने हॉस्पिटल. Respect for personal dignity and privacy. What we discussed in detail. Protection from neglect and abuse. ये तीसरा राइट है हमारे चार्ट में. We got to very careful. We got to follow the laid down procedures, laid down SOPs, and patient should not be abused for anything. All type of abuse. Neglect के अंदर लाइक जैसे कोई है कोई एग्जांपल, कोई बताएगा कि नेगलेक्ट का कोई एग्जांपल नर्सिंग वाले कोई बताएंगे? बेड सोर्स. ओके. और पेशेंट्स के लिए क्रॉस इन्फेक्शन. हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. अगर हम लोग जो हैं हैंड केयर, बेसिकली सबसे पहला जो आप देखते हो हैंड केयर होते हैं, हैंड हाइजीन. अगर हैंड हाइजीन नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट इट इज इंक्लूडेड इन नेगलेक्ट. क्रॉस इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग हैंड हाइजीन will be considered as neglect. Right to seek additional opinion regarding clinical care. हमारे उसके अंदर next right. Then comes informed consent, whether for transfusion of blood or blood components, before giving any type of anesthesia, any type of surgery, research protocol some hospital is following or we are following, and other invasive or high risk procedures. Right to complain, the patient and their relatives have full right to complain against anyone. And suppose someone asks, like Dr. Vaidyanatھ से कोई पूछता है कि सर मुझे आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट करनी है, तो he cannot tell कि यार how can you complain. He will have to tell कि किसको कंप्लेंट करनी. This right. Information on the expected cost of the treatment already discussed. Treating patient information is confidential already discussed. Refusal of treatment. Every patient has a right to refuse treatment. In fact, the patient has full right to break doctor-patient relationship. जैसे वो refusal करता है तो doctor-patient relationship को break किया जा सकता है. और right to refuse any procedure. नहीं करानी मैंने सर्जरी नहीं करानी, जबरदस्ती थोड़ी. Access to their clinical records. It does not mean you will allow any attendant or patient to take photo or make video of your file. No. That is violation of privacy and confidentiality. Information on the name of treating doctor already discussed. Determining the what info regarding their care would be provided to self and family. The patient has a right to मेरी family को क्या क्या बताना है या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बताना है. ये कोई राइट नहीं है उसका ऑर्गेनाइजेशन चिट्ठी लिखे बोले आपके पेशेंट को बताना चाहिए. निकाल दो सुनो ना, कोई राइट नहीं है. Info about the proposed care, including risks, alternatives, and benefits, already discussed. Explanation about the expected results, already discussed. Explanation about the possible complications, already discussed. Patient and family right to what they're supposed to be doing. Preparation and modification of care. The care plan, it is very very important document. क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार जो हमें बताना पड़ता है यार प्लीज फिल अप दिस प्लान ऑफ केयर और केयर प्लान व्हाटएवर. द पेशेंट हैज फुल राइट टू नो हिज और हर केयर प्लान ऑफ केयर. हम क्या करने जा रहे हैं एंड हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. वेयरएवर पॉसिबल इनकॉर्पोरेट कंसर्न्स एंड रिक्वेस्ट. जहां जहां पे पॉसिबल है वो पेशेंट की कंसर्न और रिक्वेस्ट को वी मस्ट कंसीडर. ये नहीं हो सकता कि हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस की है, नहीं हम तो चिकन ही खा रहे हैं, ये नहीं हो सकता. whatever his belief, faith, whatever is this thing requirement, आपको उस हिसाब से हमें उसको बताना. Results of diagnostic test and diagnosis पूरा अधिकार है जानने का. Any change in patient condition
बट टाइमली इंफॉर्मेशन. कई बार हम लोग देखते हैं कि हमने उसको इंटरवेट किया है, कई बार हम इन्फॉर्म नहीं कर पाते, इतनी इमरजेंसी हो जाती है, बट दे हैव फुल राइट इसमें इंटरवेट कर रहे हैं हमारे पेशेंट. ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, हमें तो कई बार जो है प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल के अंदर, हम बताया नहीं, जबरदस्ती जो है उसको इंटरवेट कर दिया या जबरदस्ती जो है सेंट्रल लाइन डाल दी. पेशेंट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड और उसके अटेंडेंट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड. अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है या इस कंडीशन में नहीं उस चीज को समझे, उसके अटेंडेंट्स को बताना चाहिए. But is disciplinary council when appropriate? Like we are following in this hospital, in our hospital, multidisciplinary counseling we are doing for most of the cases admitted in our ICU. And the day we have started this thing, a lot of problems have been sorted. वो problem, we are not facing those type of problems that the patient are creating ruckus in the hospital. Info and education. Right to education, information and education about the disease or problem. The patient and their attendants have full right. It means at the time of discharge, during treatment and at the time of discharge, doctors are supposed to be briefing, educate their patients. ये दवाई ऐसे खानी है, इतने टाइम खानी है, खाली पेट खानी है कि खाना खाने के बाद खानी है, 3 दिन खानी है कि 4 दिन खानी है. So that has to be educated by the treating doctor. आप ये नहीं छोड़ सकते कि सारे नर्सिंग स्टाफ कर दे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है उसमें. एंड अबाउट देयर हेल्थ केयर नीड्स, उनकी हेल्थ केयर नीड्स क्या है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ताकि कोई आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो. तो ये जो है लास्ट में दिया हुआ है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट देयर हेल्थ केयर नीड्स. ये एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, please follow to avoid any problem at a later date. अधिकार. पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आपकी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू हैव सम राइट्स, फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार और मूल अधिकार, कॉरस्पॉन्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जब आजाद हुए थे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भूल गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना, ड्यूटीज डालना. बट इमरजेंसी में, ड्यूरिंग इमरजेंसी, श्रीमती इंदिरा गांधी, when she was prime minister, she realized that there is requirement of telling the people of India that they have some duties also, some responsibilities also. अगर 1975, 1976 से पहले सिर्फ आजाद हुए थे हम लोग, we were liberated with मौलिक अधिकार और मूल राइट और ह्यूमन राइट्स. इंदिरा गांधी जी ने जो है उस टाइम पे जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में, जिसने 10-11 ड्यूटीज दी. एंड these duties are, you can say, what are the responsibilities and duties of patients and their attendants? इसमें हम कह सकते हैं कि it is basically partnership between the patient and the doctor or that family and the hospital. जब पार्टनरशिप होती है तो दोनों का रोल होता है. तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, पेशेंट की, to provide accurate and complete information about his or regarding his problem or disease, his health, present condition, past hospitalization, past medication, any natural product the person is taking or not. Like we have one patient जो कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में है, ये क्या नेचुरल प्रोडक्ट लिया, कहां से लिया ट्रीटमेंट, पूरा बताना पड़ेगा. व्हाट टाइप ऑफ विटामिन्स पर्सन इज टेकिंग. ऐसा तो नहीं कि वो वाटर क्या कहते हैं अपना जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स ले रहे हैं, पता लगा कि हाइपर विटामिनोसिस हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा. It is one of the most important duty of patient and their attendant is to provide accurate and complete information about their full problem, present, past, related to anything. They are supposed to be telling their full name, address, telephone number, as per their nowadays आधार कार्ड. ये सारी most of the चीजें जो है आधार कार्ड से रेगुलेट हो रही हैं. आपका नाम से पूरा, आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ वहां से पता लगा. It has to be matching. Otherwise, what problem we are facing sometimes कि
आधार कार्ड में जब पेशेंट, स्पेशली जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, व्हाट प्रॉब्लम द फैमिली फेसेस, कि स्पेलिंग मिस्टेक में कोई प्रॉब्लम है, एज की कोई प्रॉब्लम है, एड्रेस की कोई प्रॉब्लम है, एंड इन द बार्गेन हु सफर्स? द फैमिली सफर्स. In what regards? Claiming any compensation, claiming any property right, or division of any, claiming any this thing, business partnership in business. वो नुकसान होता है अगर आपका full name, address and other information is not able or not given to you. But I have seen, I have experienced in my life, लोग पूरा नाम नहीं बताते, उनको लगता है कि डॉक्टर साहब क्या फालतू में पूछ रहा नाम, एड्रेस पूरा नहीं बताता, लगता है इनको पता ही होगा, अरे हमें कहाँ से पता होगा, तुम बताओगे तो पता होगा, जो बताओगे वो पता होगा. तो अपनी पूरा नाम विद फुल स्पेलिंग, करेक्ट एज, करेक्ट एड्रेस, करेक्ट टेलीफोन नंबर अगर देंगे तो ये प्रॉब्लम बाद में, वंस पेशेंट डाइज, ये प्रॉब्लम नहीं आती. पहले दूसरा, कोई इंश्योरेंस क्लेम है उसमें अगर आपके नाम की स्पेलिंग में देर इज एनी प्रॉब्लम, एज में देर इज एनी प्रॉब्लम, देन आपको क्लेम लेने में बहुत ही मुश्किल होगी. The patient should cooperate with the doctors during examination. कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसमें पेशेंट को कॉपरेशन देना चाहिए, फुल कॉपरेट करना चाहिए. कई बार बड़े फंसी पेशेंट्स होते हैं, वो जो है कई बार डर से, कई बार सोशल उसकी वजह से, सपोज मेल गायनेकोलॉजिस्ट है और कहीं पे फीमेल डिलीवरी होनी है या कुछ होना है, बड़ी प्रॉब्लम आती है. इसलिए वो ड्यूटीज में क्या, राइट्स में क्या बोलते हैं, फीमेल अटेंडेंट होना चाहिए. कई बार लोग क्लेम करते हैं कि साहब हमें तो सब लेडी डॉक्टर से ही दिखाना है, लेकिन अगर है नहीं क्या करोगे, इसलिए सरकारी अस्पतालों में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो दे हैव टू कोऑपरेट इन दिस रिगार्ड. पेशेंट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, शुड नॉट प्रोवाइड कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन बात हो गई है, सही इन्फॉर्मेशन दो, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या हाफ इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए. या डराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एडवोकेट फोर्सफुली बाय अनलॉफुल मींस, या मैं केस करूंगा या डराओ साहब डॉक्टरों को या हॉस्पिटल को, ये चीज भी जो है इट इज नॉट वारंटेड. द पेशेंट शुड साइन कंसेंट एज रिक्वायर्ड. अगर उसको इन्फॉर्म कंसेंट का अधिकार है तो ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि साइन करे, अदरवाइज डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल प्रोसेस को नहीं कर पाएगा. कोऑपरेट विद हॉस्पिटल बाय फॉलोइंग रूल्स ऑफ द हॉस्पिटल, व्हाटएवर रूल्स ऑफ द हॉस्पिटल आर. क्योंकि आपके ये हमारे टाइम विजिटिंग टाइमिंग्स है, आपको यहाँ नहीं बैठना है, तो वो जो व्हाटएवर रूल्स हॉस्पिटल के, कि भी हम बोलते हैं कि हम तो 2 बंदों को अलाउ करेंगे, ठीक है, तीसरा अलाउ नहीं होना चाहिए. तो आपको इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी टू फॉलो दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये पार्किंग से रिलेटेड नहीं, हम तो यही का पार्क करेंगे, ठीक है. इस हॉस्पिटल नो स्मोकिंग, नो हॉर्न जोन होता है. तो हॉस्पिटल रूल में क्या कहता है कि नो स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे, तो बात जो है वो फिर वायलेशन ऑफ दिस. शुड नॉट रिसोर्ट टू वायलेंस और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी. केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपको कंप्लेंट करने का अधिकार है, मैनेजमेंट से कंप्लेंट करें. कंप्लेंट तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, यदि उसका कंप्लेंट रिजोल्व हुई है कि नहीं हुई है, क्या उसका डिसीजन मिला, नहीं तो पुलिस है, बाकी सिस्टम ही है. लेकिन अटेंडेंट्स को या पेशेंट को डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायलेंस क्रिएट करने का कोई अधिकार नहीं है. उसके लिए तो एक्ट बन गई, पनिशमेंट बन गई. पेशेंट शुड फॉलो द विजिटिंग आवर्स, व्हाटएवर विजिटिंग आवर्स आर देयर. फॉलो. Patient should ensure that payments are being made as per hospital policy. Again, अगर उसकी अधिकार है कि ये जानने का पेशेंट को कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तो उसको ये ड्यूटी भी बनती है कि टाइमली पेमेंट करे. हमेशा कॉस्टिंग जो है एस्टिमेटेड होती, कभी फुल नहीं होती या एग्जैक्ट नहीं होती. Patient should help in keeping the hospital environment clean. Patient and attendant जो हैं, they are responsible, they are duty bound to follow the rules and regulations so that hospital is kept clean. अगर आप कोई यूज कर रहे हैं, कोई आपने फ्रूटी पी या चाय पी है, उसका कप जो है आपको गार्बेज बिन में ही डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना. काफी लोग ऐसे हैं इनफैक्ट जो अपना पान खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, कॉर्नर में थूक देते, मतलब दे आर नॉट कंसर्न कि उसकी वजह से किसी को नुकसान भी हो सकता. इट इज देयर ड्यूटी. In case of any complaint, please contact DGM Operation. इस हॉस्पिटल के अंदर मिस्टर वरुण है DGM Operation, और उनका नंबर जो है साइट पे भी है, जो 24 आवर्स ऑपरेशन के बाद होता है, ठीक है.
ये सबको हमारे पूरे स्टाफ को पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कंप्लेंट किससे करूँ कैसे करूँ, तो डीजी में ऑपरेशन जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं देन इन दैट केस फिर आगे एमएस और टेक्निकल डायरेक्टर और सीईओ जो है वो अपनी चीना। With this, I have finished the rights and responsibilities.